मला येण्याचं या प्रोफेशनमध्ये एक काम आणि कारण एकच येतं, की एक प्रोफेशनल टच भेटला पाहिजे आणि इथून पुढे कुठली गाडी माझ्याकडे येईल, तर ती कधी पण तो जो कस्टमर आहे तो सॅटिस्फाईड होऊन गेला पाहिजे. म्हणून मला मी इथे यायचं होतं. इथून गेल्यानंतर जो कॉन्फिडन्स आहे किंवा जो आपण म्हणतो ना, मी झिरोपासून आलो होतो, आज हिरो तर नाही झालो, पण कॉन्फिडन्स घेऊन चाललो आहे. त्याचा एक मला फायदा झालेला आहे. आणि प्लस इकडे जी शिकवण्याची पद्धत आहे, म्हणजे थेरी असेल, प्रॅक्टिकल असेल, थेरी पण इथे खूप चांगली शिकवली जाते. पॉईंट टू पॉईंट असतात. पी पी टीमुळे मला सगळं इथे लवकर कळलं. शिकण्यास खूप मदत होते पी पी टीमुळे. कारण की ते सगळे पॉईंट्स त्यांचे एकदम करेक्ट असतात. त्याच्यामुळे ते पॉईंट टू पॉईंट आपल्याला शिकवले जातात. ते पॉईंट टू पॉईंट शिकवले गेल्यामुळे सगळं लक्षात राहतं. त्यानंतर प्रॅक्टिकल होतं. प्रॅक्टिकलमध्ये आपल्याला पॉईंट टू पॉईंट प्रॅक्टिकलमध्ये पण आपल्याला खूप त्यांची मदत होते. आपल्या हाताने आपण सगळी गाडी करतो, शिकतो आणि त्याच्यानंतर एक शेवटची टेस्ट पण असते. ती टेस्ट मी दिली. त्यात मी चांगल्यारीत्या पास झालो. मला ए ग्रेड पण त्यांनी दिलेला आहे माझ्या टेस्टमध्ये. त्याचा मला फायदा झालेला आहे. नंतर मी आज सर्टिफाईड डीलर झालेलो आहे यांचा. कारण की मी इकडे माझा कोर्स कंप्लीट केल्यामुळे आज मी इथून हॅपी कस्टमर म्हणू शकतो त्यांचा आणि एक डिसेंट डीलर म्हणून यापुढे मी काम करेल आणि त्यांच्यासाठी त्यांना खूप खूप धन्यवाद मानतो. थँक्यू. आणि त्या ठिकाणी गंगापूर रोडला माझा ऑटो स्माईल कार केअर व डिटेलिंग स्टुडिओ नावाने शॉप आहे. मला सोशल मीडियावरती कळालेलं आहे की गुजरात येथे सुरतमध्ये ऑटो फ्रेश नावाची डिटेलिंग अकॅडमी आहे आणि तेथे खूप चांगल्या पद्धतीने डिटेलिंगच्या संदर्भात स्टुडंट्सला माहिती पुरवली जाते. त्यामुळे मी व माझा मित्र आम्ही दोघेही जण डिटेलिंग संदर्भात शिकण्यासाठी इच्छुक होतो आणि त्यामुळे आम्ही लगेचच ऑटो फ्रेशच्या स्टाफला फोन केला व आम्ही आमचं ॲडमिशन करून घेतलं. त्यानंतर आम्ही या ठिकाणी आलो सुरतला. येथे आल्यानंतर आमचं 3 दिवसांचं सेशन होतं. 3 दिवसामध्ये आम्हाला अतिशय योग्य पद्धतीने नीरज सर असू द्या, येथील कृष्णा सर असू द्या किंवा त्यांचा संपूर्ण स्टाफ असू द्या, सर्वांनी खूप सुरेख पद्धतीने खूप चांगल्या चांगल्या गोष्टी आणि एकदम बारीक सारीक डिटेलिंगमधल्या ज्या काही गोष्टी असतात त्या सर्व बारीक सारीक गोष्टी, त्यामध्ये सँडिंग असू द्या, क्लेइंग असू द्या, कंपाऊंडिंग असू द्या, पॉलिशिंग असू द्या, ग्लास ट्रीटमेंट असू द्या, हेडलाईट रिस्टोरेशन असू द्या, कार रिमूव्हलची पद्धत असू द्या, सगळ्या डिटेलिंगच्या बारीक बारीक गोष्टी, सिरॅमिक कोटिंग असू द्या, या सर्व गोष्टी अतिशय योग्य पद्धतीने या ठिकाणी आम्हाला शिकवण्यात आलेल्या आहे. या ठिकाणी शिकवताना थेअरीसुद्धा होत असते, प्रॅक्टिकल होतं आणि सर्व ट्रेनर हे आपल्याला पर्सनल सर्व गोष्टी सांगत असतात. तर मी या ठिकाणी येऊन एक चांगला अनुभव घेतलेला आहे. नाशिकमधील माझ्या सर्व डिटेलिंगमध्ये करिअर करू इच्छिणाऱ्या सर्व मित्रांना मला एक सांगायचे आहे की आपल्यालाही डिटेलिंग स्टुडिओ खोलायचा असेल किंवा त्या बिझनेसमध्ये उतरायचं असेल तर आपणही ऑटो फ्रेशला येऊ शकतात. या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने शिकवलं जातं आणि आपणही जॉईन करू शकतात. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. నేను ఆటో ఫ్రెష్ గురించి యూట్యూబ్లో చూశాను. ఇంకా చాలా రీసెర్చ్ చేశాను. నేను ఇనీషియల్గా హైదరాబాద్లో వాషింగ్ సెంటర్ రన్ చేస్తూ ఉంటాను. నాకు ఇంకా డీటెయిలింగ్లో ముందుకెళ్ళాలనుకున్నాను. సో దాని గురించి నేను సెర్చ్ చేసి ఆటో ఫ్రెష్కి చూసి వచ్చాను. చాలా మంచిగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అండ్ వాళ్ళు బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ప్రాసెస్ మొత్తం థియరీ అండ్ ప్రాక్టికల్ కూడా చేయించారు. నేను ఇదివరకు అంటే నాకు చాలా వచ్చు అది ఇది అనుకున్నాను. కానీ వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది అసలు ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది. సో ఆ ప్రాసెస్ ప్రకారం చేస్తే మనం ఇంకా ముందుకెళ్ళొచ్చు. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా డీటెయిలింగ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అందుకోసం ఇక్కడికి వచ్చాను. చాలా అంటే చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మాకు. అంటే ట్రైనింగ్కి వితౌట్ ట్రైనింగ్కి మనం చేసే పని చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఎవరికైనా ఈ ఫీల్డ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు ఎవరైనా సరే ముందుకెళ్ళాలి అనుకుంటే ట్రైన్డ్ అయ్యి చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే మనం చేసే పని 100% రిజల్ట్స్ రావాలి అంటే ముందు ట్రైనింగ్ తీసుకొని థియరీ పరంగా కానీ ప్రాక్టికల్గా ట్రైన్డ్ అయ్యి ఏ ప్రోడక్ట్స్ వాడాలి, దాని రిజల్ట్స్ కానీ అవన్నీ కరెక్ట్గా రావాలి అంటే ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే మంచిగా 100% రిజల్ట్స్ వస్తాయి. और यहाँ आने के बाद
मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है। पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ थ्योरी और हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल हमने किया है, सब कुछ सही है। और एकदम डीप नॉलेज हमें जो मिलना चाहिए वो सब कुछ हमें मिला है यहाँ पर।